dear students, hope that you will be fine. This time I have conducted one more live session for you for the fourth semester in which we have a paper inclusive education. So dear students, today I will give a brief introduction about the inclusive education. आप जल्दी जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी इस चैनल में जुड़ जाए, जल्दी लाइव सेशन में आप जुड़ जाए, ताकि हम जो आज का जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पे हम थोड़ा आज डिफिनीशन बोलेंगे, डिफिनीशन, इसकी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह टुमारो हम इस पे इस तरह से जो भी आपके सिलेबस में इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है वो हम अपलोड करेंगे, उस पर हम एक एक लेक्चर देंगे। मगर आज हम डिसाइड करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने ये एजुकेशन पे एक फैमिली बनाई है, ताकि जो भी बच्चे हैं जो जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन में है, चाहे कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो या बीएड कॉलेज में हो, तो यह वहाँ पर आपको ये बहुत बेनिफिशियल है। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डॉक्टर रईस अहमद, डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। Inclusive education is a new approach towards educating the children with disabilities and learning difficulties with that of normal ones under the same roof। तो ये डिफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद है कि जब हम एक बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर कौन से बच्चे जिनको डिसेबिलिटी हो, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो, जिनको प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे हेयरिंग इम्पेयरमेंट कुछ बच्चों का होता है, हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होते हैं। उन बच्चों को जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे अंडर द सेम रूफ, दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इट एडवोकेट्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव टू बी एजुकेटेड अलॉन्ग विद नॉर्मल पीयर्स in their regular classrooms. India has advocated the implementation of the inclusive education, supported by relevant policies, legal enactment schemes, programs and plans। तो इससे पहले कि हम इसमें और भी बहुत सारे डिफिनीशन आपको बोले, मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ रूल एक्ट्स बोलूँगा, पॉलिसीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बनाए हैं इनके लिए। उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ है। जैसे मैंने आपको बोला, इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज वे अप्रोच एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। यह एक ऐसा पॉलिसी है जहाँ पर हम चिल्ड्रन जो डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उनको पढ़ाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। अब 3 है इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी स्पेशल एजुकेशन एक कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे। लीगल प्रोविजन पॉलिसी जो है, लेजिस्लेशन, जैसे नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो आया था 1992, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, एक एक्ट बनाया गया उन्हीं के लोगों के लिए जिनको कुछ एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। वो एक्ट कब आया, ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज़, एक पॉलिसी बनाई गई इन डिसेबिलिटीज़ के लिए, नेशनल पॉलिसी, वो कब आई, 2006 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, NCF जिसको बोलते हैं, वो कब आया, 2002-2005 में। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट जो आया था 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान जो हमारी इंडिया में आया था, SSA सर्व शिक्षा अभियान और यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आया था 2000 में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, UNCRPD, वो कब आया था, 2008 में। Scheme of Integrated Education 1974 by the Development of Social Welfare. Article 21A, Free and Compulsory Education. RTE Act 2009 become operated 1st April 2010। So ये कुछ important points थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब इसके बाद हम और भी बहुत सारे points हम आपके साथ पढ़ेंगे, आप अभी बने रहे। तो inclusive education is about ensuring access to the quality education for all students by effectively meeting their diverse needs in a way that is responsive, accepting, acceptable, supportive. Students participate in education programs in a common learning environment with support to diminish and remove barriers and obstacles that may lead to an exclusion. Inclusive education is carried out in a common learning environment, that is educational settings where students from different backgrounds and with different abilities
learning together in an inclusive environment. A common learning environment is not a place where students with intellectual disabilities or other special needs learn in isolation from their peers, students. फिर है बहुत सारी है, जैसे मैं एक डिफिनेशन पढ़ूंगा, उसका नाम था माइकल एफ, उसका नाम था गैंगरिको। उसने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, principles, practices that seeks more effective and meaningful education for all students, regardless of whether they have exceptional levels or not. इस तरह से inclusive education or setup may be defined as a place where everyone belongs, is accepted, supported, and by his her peers and other members of the school community in the course of having his or educational needs met. तो ये भी है। अब मैं कुछ नेचर के बारे में बोलूँगा। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, एक डिफिनेशन बोलूँगा, इट इज़ अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टी विद दैट ऑफ द नॉर्मल वंस अंडर द सेम रूफ। इट रेफर्स टू द एजुकेशन सिस्टम दैट accommodates all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic, other conditions. The range of the challenges confronting the school system while including children with their diverse abilities and from diverse backgrounds have to be met by creating a child-centered pedagogy capable of successfully educating all the children. Inclusive class may have, amongst others, children with a disability or gifted children, straight or working children, children from remote or nomadic population, children belonging to ethnic, linguistic or cultural minorities, or children from other disadvantaged or marginalized groups. Inclusive education is about reconstructing the cultures, policies and practices in a school so that they respond to the diversity of students in their locality. In recent years, the concept of inclusive education has been broadened to encompass not only the students with the disabilities but also the students who may be disadvantaged. Inclusive describes much more than the acceptance of children with the disabilities, exceptional in the mainstream. Inclusive education programs do not form on an accommodation of these children into the general education settings, but are focused on the reconstruction of the schools to accept and provide for the needs of all the students. In other words, no discrimination is made among the exceptional and non-exceptional children. All the children in all the shades of their exceptionality are welcomed by making necessary arrangements and accommodation for the children in the same school and same क्लास अलॉन्ग विद देयर नॉन डिसेबल्ड पीयर। सो ये है मेन जो क्रैक है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब जो नेचर है इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। आपके सामने मैं कुछ नेचर भी रखूँगा, क्या क्या है इसमें। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इट दैट इज इंक्लूडिंग ऑल। पहला प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। तो हमें सबको इकट्ठे इसमें लगाना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन देयर लोकल स्कूल्स। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में गेट यूनिक अपॉर्चुनिटी। दूसरा है जो नेचर है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में गेट यूनिक अपॉर्चुनिटीज टू गेट एजुकेशन विद पीयर्स इन द सेम एज ग्रुप अवेलेबल टू दोज विदाउट एक्सेप्शनलिटी। तीसरा, इट एम्स टू इंटीग्रेट एंड इंक्लूड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद द जनरल सिस्टम ऑफ एजुकेशन so that education of the disabled and non-disabled may proceed in side by fulfilling the needs and objectives of both the groups without any differentiation. It tries to bring desired education opportunities at the doorstep of exceptional children rather than expecting from them to none and try for themselves to avail these opportunities. Inclusion provides a foundation for exceptional in the way they are not possible in special schools and classes. तो ये चीज़ें हैं नेचर में आते हैं। अब जो डियर स्टूडेंट्स आपको जो एग्ज़ाम में है या आपके सिलेबस में है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ मेन प्रिंसिपल्स जो डियर स्टूडेंट्स आपको सुनने में हैं ताकि आप इसको लिख भी सकते हो। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ, जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स। ये पहला है इसका, सब स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स से पहला है, सब स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, उसमें आएगा जैसे कोई डिफ़िकल्टी वाला बच्चा है और नॉर्मल बच्चा, इकट्ठे उनको पढ़ाना है। दूसरा, इसमें मैं थोड़ा पढ़ूंगा, स्टूडेंट्स लर्न इन डिफरेंट वेज, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हेल्प द सीकर्स टू टीच इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू एन इंफॉर्मेशन विजुअली, while others learn best through the learning information working in groups or activity based project। सो ये दोनों को इकट्ठे पढ़ाना है। Principle of choosing appropriate material. According to this principle, it is important to choose books and materials that reflect the image of a diverse people. Primary sources should be used for selecting an appropriate material relevant to topic. Principle of exploring multiple identities. तो ये तीसरा प्रिंसिपल है इसका। तो हमें एक्सप्लोर करना है मल्टीपल आइडेंटिटीज। नंबर 1, building confidence and affirming identity for the students supports their learning. Some ways to affirm and encourage students' identities are: number 1, creating activities that help students to talk about and feel pride in themselves.
engaging students in a project, is maintaining a respectful environment among the students where they learn to respect each other's opinion. तो ये और एक है नंबर और एक प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड उसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर्स. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट students learn about other cultures and religions in a positive manner. Students should be given an opportunity to learn about the ever changing cultures of the world. तो ये इंपॉर्टेंट है. और एक प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल हो गए मैं रिपीट करता हूँ. पहला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर्स, हो गए 4. फिफ्थ वाला है प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेसन्स प्रॉपरली, और लास्ट इसमें मैं पढ़ूंगा फिर है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन एजुकेटर टू बी फ्लेक्सिबल इन द एडॉप्टेशन ऑफ ऑल द लेसन्स इन ए करिकुलम. इफ ए लेसन is pre-designed, it is always a good starting point. It should provide meaningful opportunities for the students to present their beliefs and relate it to their personal experiences. लास्ट वाला जो छठा जो है इसमें प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. A teacher should promote social justice in the classroom in terms of equality for all. In classroom, all students should be considered equal, irrespective of their differences. They should be made to learn social justice and equality for all. Students should be encouraged to develop a sense of civic responsibility. So, dear students, ये थे कुछ principles. तो हम इसमें और भी कुछ आज ही हम डिस्कस करते हैं, मगर मुझे लगता है ये हम कल करेंगे. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्कोप है और इम्पॉर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है. स्पेशल एजुकेशन इज ए सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन. को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बगैर, नॉर्मल बच्चों के बगैर, जो भी डिसेबल्ड है, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए अलग जो है एजुकेशन, उसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन. वो इसमें है, इसमें क्या है, it was based on the assumption that children with disabilities and some special needs that could not be met in a mainstream school, therefore they need to study in a separate school with other children having similar needs. Special education in India was evolved in 1880 and special schools were generally organized to different disabled categories. Children are taught by the special having expertise on specific impairment. Their needs may be sometimes understood better. In special schools, children grow up with their disabilities, peers and develop among a common culture. तो ये है इसमें. अब है इसमें ट्रेनड प्रोफेशनल्स लगते हैं, स्पेशल करिकुलम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लगते हैं, वो अलग लगते हैं स्पेशल बच्चों के लिए. इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, द चाइल्ड इज सीन एज ए प्रॉब्लम. इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन द चाइल्ड इज सीन एज ए प्रॉब्लम एंड नॉट एज ए सिस्टम. एक प्रॉब्लम उसको देखा जाता है, न कि सिस्टम. ही और शी इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड इज ही शी कैन नॉट लर्न. It is his or problem. In this way, instead of subjecting the disabled students to a sort of segregation by putting them in a separate special for their education, their integration association with the integration means association with the non-disabled population of their peers was targeted to achieve through this a new philosophy of integration. Thus, it can be safely called as a proper step in putting a disabled children into the mainstream, the place and the opportunities for getting education and the training with the population of non-disabled in the proper. तो यही है इंटीग्रेशन, मतलब उन बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना, वही है. तो उसी का नाम, उस प्रोग्राम का नाम फिर हमने रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन. तो the concept of integrated education arises outcome of the national policy of education 1986 recommended equal opportunity to all, not only for the access but also for the success. Integration signifies the process of integration of disabled with the normal children in the same education setting. It inculcates affection, love, and respect for disabled children. इसमें है, it is a less expensive, does not require special infrastructure. हो इंशाल्लाह हो that हम इसको आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा. तो लास्ट में पढ़ूंगा. इंक्लूजन इज अ टर्म विच एक्सप्रेसेस कमिटमेंट टू एजुकेट ईच चाइल्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अप्रोप्रिएट इन द स्कूल एंड द क्लासरूम ही शी अदरवाइज इंटेंट. तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच. हमारे चैनल को एक नाम है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे बच्चों तक पहुँच जाए. थैंक यू वेरी मच.